My question is for Rima or Farhan. Anyone can take it. The big thing with this kind of films, the trailer we saw. There's a mystery element to it. Are you guys skeptical that if the spoiler goes out, how is it going to spoil the film, or the film is much more than that, or are you guys going to take steps to make sure that nothing goes out? So the trailer has been designed like that. And the second question related to the first, and is this the reason it's so low key so far? Because it's a big film, Amir Khan film, we haven't seen much. It's 1 month to go. Generally, it's a 3 month long promotion. So, two questions anyone can take. As far as the suspense nature of the film is concerned, there's obviously only that much in the trailer that we can tell you. If we tell you what happens at the very end, that would defeat the purpose. But the thing is, I don't feel that once you know what the end of the film is, that it ruins the experience second time around. I think a lot of films have been made in India in the past, which have been suspense movies, but have relied on good performances, good story, good drama, good music, and people have come back because when you know what happens at the end, sometimes you come back in and discover new things about the film while you're watching it. And apart from the fact that it is a suspense movie, there is a very, very strong emotional drama content in this movie, which Amir touched upon about his past and Rani's past. And I think that has its own attraction and it has its own kind of lure, so to speak. So I don't think that that will really, really affect. Eventually, if the film is good, people will come back to see it again if they do like it. And as far as the marketing of the film is concerned, I'll hand it over to Ritesh. I'm sure he'll have some better answers. Right. So 4 weeks, no, it's 6 weeks. I think today is the starting of the campaign for the music as well as the film campaign. So I think that's when you start your marketing and like the cast of the film was also not here the last 2.5 months. So we couldn't have kicked off the campaign. अब फिर बोलते कि आमिर नहीं आया मतलब कुछ गड़बड़ है. अच्छा ये फिल्म काफी पहले बन चुकी है, इतनी देर क्यों हो रही रिलीज में? इधर मैं तरुण मोहम्मद, बॉलीवुड आईना से. एक्चुअली ये फिल्म की शूटिंग करीब आई थिंक अगस्त में कंप्लीट हुई थी. नवंबर, हाँ लंदन शेड्यूल. तो नवंबर में हमारी शूटिंग मुकम्मल हुई इस फिल्म की और उसके बाद हम चाह रहे थे कि जल्दी रिलीज़ हो, लेकिन जब हम अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं अक्सर वक्त लगता है बनाने में. तो इसी तरह रीमा जी को भी फाइनल एडिट में जो वक्त लगा वो मेरे हिसाब से वो मुनासिब है, क्योंकि वो हम लोग कोई कसर ना छोड़ें कि फ़िल्म जैसे हम बनाना चाहते थे वो वैसे हम बना पाएँ. और हमें खुशी है इस बात की कि अब जब फिल्म को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हेलो 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 अब जब हेलो 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 तो अब हमें खुशी होती है जब हम फिल्म देखते हैं कि हम जो बनाने चले थे उसके काफ़ी हम नज़दीक आ पाए हैं, ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू. आमिर, रानी अपनी पिछली फिल्म में कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, उसमें वो आपकी फैन बनी थी. रानी, आपने आमिर को बताया था कि आप उनके पोस्टर्स लगाती हैं अपने कमरे में? हेलो, आप बताया तो था आमिर. नहीं, मुझे नहीं बताया था उन्होंने कि ये मेरी फ़ैन है इस फिल्म. कब बताया? बताया है तो भूल जाता है. नहीं यार. हाँ, अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा. शिकागो जाके भूल गया. आमिर, पिछले साल तो ये फैन बनी थी मेरी उस फिल्म में. ये इस फिल्म में आपके पोस्टर्स देखती हैं और आपकी बहुत बड़ी फैन होती है. आपको किस भी करती हूँ पोस्टर्स को. चलिए, थैंक यू. आमिर, पिछले 1-1.5 साल में जितने सुपरस्टार्स हैं, सो कॉल्ड ए-लिस्ट स्टार्स, सभी लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है. सलमान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, और सभी ने कॉमेडी का पुट रहा है. अब आपका ये सीरियस इंस्पेक्टर उन सब कॉमिक इंस्पेक्टर्स को कैसे कॉम्पीट करेगा? एक्चुअली आई डोंट थिंक हम लोग या मैं उनके साथ कम्पीट कर रहा हूँ. ये सारी फिल्में जो हैं वो बहुत ही कामयाब फिल्में हैं जिसमें अजय और सलमान और अक्षय ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है. और
ये थोड़ी अलग हटके है, इसमें जो मेरा किरदार है वो इतना रंगीन नहीं है जैसे चुलबुल पांडे का था दबंग में, या तो वो खुद अपने अतीत के साथ, अपने जज्बातों के साथ जूझ रहा है। और ये आउट एंड आउट एंटरटेनर जो फिल्में होती हैं उस किस्म की फिल्म नहीं है, हालांकि मेरे हिसाब से बहुत ही एंटरटेनिंग है एक अलग तरीके से। इसमें कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत अरसे के बाद एक सस्पेंस ड्रामा फिल्म आ रही है, तो मुझे बड़ी पसंद है। देखते आमिर, रहो क्या लगता है। इस फिल्म में करीना और रानी दोनों में से बेहतर एक्टिंग किसने की है? मुझे लगता है कि ये सवाल आप पहले भी कई दफ़ा मुझे पूछा गया कि कौन सी हीरोइन मेरी फेवरेट है, या रानी से पूछा गया कि कौन से खान उनके फेवरेट हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं है। अगर मैं सच्चे दिल से कहूँ तो जब मैं आज फिल्म को देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि रानी के रोल में और कोई फिट होता है या कोई कर पाता, और इसी तरह करीना के रोल में और कोई मेरे जहन में नहीं आता जो इतना अच्छी तरह से ये दोनों कैरेक्टर्स जिन्होंने इतने अच्छी तरह से किया है। जी जावेद साहब, this side जावेद साहब, on your right. मुस्कानें झूठी हैं. I think the imagery is beautiful. The poetry that you've written in this song is beautiful. Maybe after quite some time, जो आपकी इसमें जो thought आपने जो डालने की कोशिश करी है, maybe in the last 2-3 years, this is something which is totally new. Something about the experience of writing मुस्कानें झूठी हैं and the other songs of this film and experience of working with Ram Sampath. मुस्कानें झूठी हैं, the entire imagery is very very new, maybe from what you've written in the recent past. Something about the experience of writing मुस्कानें झूठी हैं, the other songs of Talash, and the experience of working with Ram Sampath. I couldn't get the later part. He's saying that you've written very good lyrics in मुस्कानें झूठी हैं. So far I agree with him. But after that what? No, sir, it's something new from what you've written in the recent past. Something new from what you've written. This is my first film with Ram Saab, and hopefully not the last. You know, he belongs to a generation that has a totally fresh take on Indian film music. And Ram is known for being extremely, almost fanatically original. And his compositions, his structures are very different from what is available in the market all the time. I'm happy that you like that song. That song, Muskane Jhuti, has been written in strokes. If you will see that the lines are like a collage. Ultimately, they are in themselves, complete in themselves, but ultimately they make an image. I am very, very happy about a song, Jia Lagena, because this is a kind of a composition that doesn't come nowadays in films. And I am quite convinced that it will stand out, because you cannot think of any other song in last few years that has this kind of zing or this kind of composition. So it was a pleasure working with him, and I do look forward to work with him again. पहले तो ये मालूम कीजिए कि फरहान सच बोलते हैं कि नहीं. The song is set in a very interesting world in the film. Or today we've tried to kind of recreate that world, which is the world of Hotel Lido, which is where this character of that Kareena plays can be found in the film. It talks about a world in which people are not what they seem, that there are faces hidden behind faces. So in that context, absolutely, Muskane Jhoti hai. But in that context only. Hi, this question is for Reema and Amir, both here straight. Hi. There were reports earlier that Talash was first offered to Shah Rukh Khan. So how true is that? And did Amir know about this? So both of y'all. I would rather not talk about things that didn't work out. I think what is important and why we're here is for things that did work out, And ultimately I think it happens all the time in films, but I think ultimately, like Amir says, what he said about Kareena and Rani,
that he cannot imagine anybody else in the role, and he's convinced that these two are the best people. I feel that about all three of my principal cast. I feel that about Nawazuddin, and I actually feel that about my entire secondary cast too. Amir, quite a revelation. Your expression showed that you didn't know that it was first offered to Shah Rukh. No, I didn't. And even my other films, I don't know who it's offered to before they offered to me. I have absolutely no idea. So, but next time somebody offers me a film, I'll include this question. फरहान आपके यहीं बगल में ही राइट में मेरा सवाल दो सवाल है एक कि आमिर एज एन एक्टर या प्रोड्यूसर और दूसरा आप इस फिल्म में दिखाई देंगे कि नहीं Amir, as an actor, for sure, I'm a huge fan of his performances in many of his films. And actually, I didn't mention it to him, but on the way back from Delhi last night, on the flight, they happened to be showing Dil Hai Ke Manta Nahi, which I saw again after a very, very long time, and I enjoyed watching it again. So for me, definitely as an actor, and I think as far as a producer goes, he's a very brave producer. He's taken risks on many films. So I do feel very glad that there are producers who are doing that. And what was your second question? मैं इस जवाब में भी सुनाई नहीं दूंगा. Rani, my question is for you over here. We saw you flaunt some really mean moves in Ayya, belly dancing and the works. Will we miss that wild streak in this movie, or what Rani Mukherjee can we see in Talash? It'll be quite a surprise actually, the way I am in Talash. But yeah, it's a really nice role and I've really enjoyed playing it. But no, there are no belly moves that I do in this film. Not at all. And Amir, like we said, she was a huge fan of yours in Ayya. Do you manage to watch the movie? No, I didn't catch the film. Actually, I was quite lost in Chicago. When I went there, I switched my phone off and I was just working on the film and I had no idea what was happening in India. So I've just landed. I didn't even know she was a fan in the film. Amir sir? Yeah. Should I go first? Actually, Reema is not the first woman director I'm working with. I've worked with my wife, Kiran, and I've also worked with Deepa Mehta. For me, it's totally irrelevant whether the director is a male or a female. It doesn't matter to me. What matters to me is how good the director is and how comfortable I am working with the director. So whether it's male or female, that's irrelevant to me. My experience of working with Reema was fantastic. I really enjoyed working with her. I found that she's someone who's very clear about what she wants. She's extremely perceptive of performances. And I found that as an actor, I was guided a lot by her and by the observations that she made when she saw me doing a rehearsal. And she was a big help and a big guide to me as an actor. So I really enjoyed working with her. I found her extremely open. I found her extremely demanding as well, both things that I like very much. And I found that I could completely trust her instinct on the film. And that was a big, that means a lot to me. So thank you, Reema. Rani? Well, on my part, I mean, working with Amir, Rani and Kareena and Nawaz, it was a dream, you know. And in terms of, yes, Amir has a lot of creative inputs, but it's something that I've really appreciated. I've always found him to be extremely respectful of my vision for the film. And at any given point, that was what he was trying to bring out to the best. You know, he understood what I wanted to do and was really trying to make that happen. So big thank you to Amir for that. And also, in terms of Rani and Kareena, I think that they're way more experienced than me, but both of them were really kind and let me direct them. So it was great. Hi, good evening. Vikram Thapar from NDTV. Farhan,
in front of you. Yeah, hi. The last one that you guys did, Zindagi Na Milegi Dobara, fabulous music, Shankar Ehsaan Loy, and you generally don't, change a winning combination. So why Ram Sampath this time for this film? I met with Ram when we were prepping the film, and we kind of, I think I instantly gelled with him. We have a very similar aesthetic, sensibility, and I think that he really understood what I wanted for the film. And as time, I think, has proven, I was right with my instinct, because I think he is the best person to do music for this film. That's why. Amir sir, my question is here. Manish, Amir TV9, sir. this side. Hi. Yeah, Manish from TV9. My question is to Rani. Rani, आप और करीना साथ में इस फिल्म में काम कर रहे हैं. करीना की तो रियल जिंदगी में सच्चे जीवन शादी की तलाश पूरी हो गई, तो आपकी तलाश कब पूरी हो रही है? नहीं, मेरी तलाश अब तक ख़त्म नहीं हुई है. जब हो जाएगी तब आप लोग जान लेंगे. आमिर सर, आपकी फिल्मों का प्रमोशन हमेशा से ही आपकी फिल्मों का प्रमोशन हमेशा दूसरे कलाकारों से अलग होता है, और जिस तरीके से हमने 3 इडियट में देखा था कि एक टास्क था, मीडिया ढूंढ रही थी आपको और आपके फैंस ढूंढ रहे थे, तो इस बार तलाश में किस तरीके से अलग करने का सोचा है प्रमोशन? इसमें मैं गायब होने वाला हूँ, आप लोग मुझे तलाशते रहेंगे, आई होप. आमिर आपके लेफ्ट साइड में, रेखा खान यहाँ. मेरे लेफ्ट साइड में. सॉरी, आपके राइट साइड. मेरे राइट साइड में. अच्छा. हाँ, एक प्रोड्यूसर के तौर पे आपने बहुत ही उम्दा और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स की फिल्में दी हैं अब तक. जी. लगान हो, पीपली लाइव हो, तारे जमीन पर हो. शुक्रिया. तलाश एक थ्रिलर लग रही है. इसमें क्या अलग है और कितना प्रेशर है आप पर आपकी पिछली फिल्मों की सफलता का? देखिए, पिछली फिल्मों की सफलता का प्रेशर तो हमेशा रहता है, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोगों की उम्मीद मुझसे ज़्यादा है, और मुझे खुशी भी है उस बात की. थोड़ा डर भी लगता है उससे, लेकिन जो कुछ प्रेशर होता है वो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो काम में आड़े ना आए. और ये कहानी मुझे बड़ी पसंद आई. ये ना सिर्फ एक एक्चुअली ये थ्रिलर नहीं है, ये सस्पेंस ड्रामा है. तो ना सिर्फ ये एक सस्पेंस ड्रामा है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत ही एक गहरी जज्बाती कहानी भी है, और इसीलिए मुझे इतनी पसंद आई. और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये फिल्म पसंद आएगी जब आप देखेंगी. जी. आमिर जयंती फ्रॉम झी 24 तास. आमिर इथे. हां ओके. मी मराठीतून हा प्रश्न करते तुला. आमिर, एक कॉपचा रोल केलायस या फिल्ममध्ये, एका पोलीस ऑफिसरचा रोल केलायस, आणि नक्कीच तुझं काम असं असतं की तू रिसर्च शिवाय कधी काम करत नाहीस, आणि सध्याच्या पोलिसांचा, पोलीस फोर्सचा मनोबल खचलाय असं म्हटलं जातं. त्याचा जो सेल्फ रिस्पेक्ट असतो किंवा सेल्फ एस्टीम असतो तो कुठेतरी त्याला प्रभाव पडलाय. तर ॲज म्हणजे ह्या रोलमध्ये तू काम केलंस, तुला असं वाटतं का? एक्चुअली ये रोल में मुझे इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी. मराठीत प्रयत्न करशील? नहीं, लेकिन सब लोग है ना यहाँ पे. तो सरफरोश में जब मैंने रिसर्च की थी, वो उस फिल्म की रिसर्च में जो कुछ मैंने रिसर्च की थी एज अ कॉप, इस फिल्म के लिए मुझे उस किस्म की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. तो लिहाजा जो मैंने इनपुट्स इस फिल्म में डाले हैं वो अलग किस्म के हैं, और उस किस्म की रिसर्च करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी. थोड़ी बहुत की मैंने, हम लोग ने जो कॉस्ट्यूम्स पे हम लोग मिले ताकि एक्यूरेसी आए कॉस्ट्यूम में और वगैरह वगैरह, लेकिन वो उस किस्म की रिसर्च नहीं थी. पण पोलीस ऑफिसरचा रोल हा इझी असतो असं वाटतं? कोई भी रोल इजी नहीं होता. मेरे लिए तो हर रोल मुश्किल होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस किरदार के जहन में मैं उतर सकूँ और समझ सकूँ पूरी तरह. कोई भी रोल मेरे लिए आसान नहीं होता. Three principal cast. Let's get innovative with this answer, not just say that this would have been the ideal cast. What is the cast you guys would have chosen? Starting from Zoya, perhaps. Yeah? If it's not me, Rani and Kareena. Is that right? Yeah. Somebody else? Yeah. Into the mic, please. Into the mic.
Thank you. Yeah, Amir's always said, don't you dare. I'm the wrong person to answer this because they were my top three for this. I mean, if I had to list it, they were on my top three. So I'm not good for this because I in my head knew that they were going to be in the film. Yeah, I didn't really think of anyone else. Hi, my question is for Zoya and Rima. Here, right here. Yeah, sorry, we've cancelled the question. So it's silly, you know. It's sorry. ये कास्ट कैसी रहेगी? Brando, Sophie Loren and Elizabeth. Okay, Jabal uncle has an answer for you. How about Brando, Elizabeth Taylor and Sophia Loren? Okay, so you have your fun answer. Yeah. Okay, my question for Zoya and Rima. How do you guys manage to write so effortlessly? I mean, be it Zindagi or this. I mean, I see But effort. there is a lot of effort. There's a lot of effort actually. So it's actually not that effortless, though maybe it's coming across. Yes, please. Please get rid of this idea that they write effortlessly. I'm really scared that one of these days, one of them is going to kill another. They fight so much that it is frightening. आमिर आपसे मेरा सवाल है आमिर इधर आपके राइट में आप जिस मुहाने पे हैं करियर के अपने हर तरह का किरदार आपने निभाया है लेकिन क्या ऐसा कोई किरदार अभी तक बाकी है जिसकी तलाश है आपको देखिए बहुत सारे किरदार हैं और मतलब उसका कोई अंत नहीं है हर इंसान अलग होता है और हर कहानी अलग होती है और मुझे लगता नहीं कि लेकिन मैं जब किसी फिल्म को चुनता हूं तो उस वक्त मेरे जहन में किरदार नहीं होता उस वक्त मेरे जहन में एक्चुअली कुछ नहीं होता मैं जब कहानी पढ़ता हूं या सुनता हूं तो उस वक्त मैं एक ऑडियंस रहता हूं और उस वक्त मैं कहानी सुनकर मैं रिस्पॉन्ड करता हूं अगर मुझे अच्छी लगती है दिल को छूती है तो मुझे करना है और जो लेखक ने कहानी लिखी है किरदार लिखा है उसको मैं फॉलो करता हूं तो अपने जहन में पहले से मेरे जहन में कोई ऐसा किरदार नहीं रहता कि भाई मुझे अगली फिल्म इस किस्म की करनी है मेरा किरदार ऐसा होना चाहिए तो अब मैं उस किस्म की कहानी तलाश करूं इस तरह से मैं काम नहीं करता मुझे लगता है कि जो अगर मैं पहले से तय कर लूं कि मैं इस किस्म का कैरेक्टर या किरदार करना चाहता हूं तो वो पहला कदम ही गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से जो फिल्म बनती है उसका पहला ऑर्गेनिक या सही कदम होता है कि लेखक जो है वो अपने मन से एक कहानी लिखे और उस कहानी में फिर हम सब एक एक करके जुड़ें जिन जिन लोगों को वो कहानी पसंद आती है तो वो एक ऑर्गेनिक तरीका होता है फिल्म मेकिंग का जिस पे मैं मानता हूँ आमिर या सॉरी व्हाट इज द क्वेश्चन सॉरी Well, yeah, I mean, even generically, they're very different films. The trigger point for this one actually is, I mean, I can't speak about it too much, but it's a kind of an urban legend. And Zoya, I think, was returning home from a party and saw something that is like an urban legend. So it's based on that. आमिर देखिए इस सवाल का जवाब इनको नहीं देना चाहिए इससे ज़्यादा बिल्कुल और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा Amir, this is for you again, Raj here. Today the entertainment is become very vast. So what's the definition of entertainment according to you? Well, I think anything which engages your mind or your emotions is, for me, is entertainment. So it's not necessarily something that only makes you laugh or cry or something, but it's anything that engages you, engages your mind, your heart, your conscience, something that keeps you engaged and excited. Yeah. Amir, the producers, all three of you actually, here in your front of you. Yeah. There were rumors, there were reports that the music release would be at Kamatipura. Amir, you said your phone was switched off, but I still like to know why was it not at Kamatipura? Well, that was one of the ideas that came up from one of the team members. But all three of us felt that would be a very insensitive thing, because
we don't want to use anyone's misfortune to promote our film, and I think that is not something that any one of us would like to do. So while that was an idea, the moment it came up, we cancelled that idea, and that's why it's not there. Yeah. So explain this set. I mean, what is this part of the movie now? Well, the film is about. The film is about a certain underbelly of the city, and Kareena plays a hooker in the film. So that is definitely a part of our story, but that does not mean that we would like to use real life situations to market our film. So that's not something we would like to do. Talking about Kareena, because we started here with one of your, you said you're very happy that she's not here for a reason. To the producers again, not talking about the story, but to the credits here. We'd be really curious to know if Kareena Kapoor Khan would be named. How would it go? Kareena wants to be credited as Kareena Kapoor, so that's what the credit is in the film. Thank you. आमिर आपके राइट में सर यही सर 2.5 महीने बाद आप मिल रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, अभी भी करीना की तलाश पूरी हो चुकी है, रानी ने भी बताया, सलमान खान साहब की तलाश के बारे में आप ही बताते हैं हमेशा, तो आज कुछ कह दें, 2.5 महीने हो गए कोई तलाश नहीं मिली. सलमान साहब की तलाश के बारे में मैं क्या बताऊं, वो किसी की सुनते हैं तभी तो बताऊंगा मैं. सुनते कहाँ हैं वो किसी की, मेरी कहाँ सुनते हैं भाई. चलिए, उम्मीद है कि उनकी तलाश बहुत जल्द खत्म हो जाएगी. Yeah. So we'll take last 2 questions. Yeah. एक फोटो एल्बम कम पड़ेगा उनके लिए. आमिर सर प्रभात here. Amir sir. जी. Tell something related to Nawazuddin. Praise him something for that. Nawazuddin, not only Nawaz, actually Raj is also here. Raj, hi. और हमारे बाकी फिल्म के आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं आज, और सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है. मुझे लगता है कि इस फिल्म की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो कास्टिंग इस फिल्म में हुई है, और रीमा ने जिस किस्म के एक्टर्स को चुने हैं, और एक्चुअली जिस किस्म के किरदार लिखे गए हैं स्क्रिप्ट में, और फिर उनकी कास्टिंग जिस तरह से हुई है, मुझे लगता है दैट्स वन ऑफ द बिग स्ट्रेंथ्स ऑफ द फिल्म. ईच रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईच रोल इज़ बीन पिक्ड वेरी केयरफुली, and each actor has done very well in the film. Nawazuddin had done short role in Sarfarosh also. So what? जी हाँ, नवाजुद्दीन ने सरफरोश में भी काम किया था. So what difference do you find between that Nawazuddin and Nawazuddin of Talash? नवाजुद्दीन तो पीपली लाइव में भी थे, उन्होंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल किया था मेरी फिल्म में पीपली लाइव में, तो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं वो, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं, और मुझे खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी कामयाबी हो रही है, मुझे बड़ी खुशी होती है देख के. Amir, hi, straight here again. You've just come back from Chicago. If you could just tell us a little bit about your Dhoom 3 schedule, and we also hear that you've banned cell phones on the set because you don't want your look out. Who am I to ban cell phones? That's the kind of reports which we. No, don't believe all the reports that you write. I don't write. I'm not. Don't take them too seriously. But the schedule went very well. I'm happy with the way the schedule went, I have to say, and. Nowadays with cell phones, everyone has a camera. So there is no way we can actually restrict what is happening. Kya, you want to show something? Oh, yeah. Yeah, let's do what we came here to do actually. Sir, one last question to Amir, you, sir. Amir, one question last here. question. Amir, okay, last question. Last question from my side. Sir, being an actor, I'm an aspiring actor.